साल स्पेसिफिकली हम सब के लिए गर्व की बात है कि मामी फिल्म फेस्टिवल जो हमारी जो 16th फेस्टिवल है, 16वां फेस्टिवल है, अब भी जारी है। एंड इट इज़ रियली द फिल्म फ्रेटर्निटी, इट इज़ मेंबर्स ऑफ Cinema goers, cinema lovers, members of the media. I hear our audience, members of the audience, all responsible for helping us keep the flag of Mami Film Festival flying. And kudos to that. Congratulations to everybody, the organisers, for keeping this going. Ma'am, you're looking really gorgeous. Thank you. I just like to wish everybody happy Diwali in advance. साल हो गए हैं फिल्म इंडस्ट्री चलते हुए और मैं इस फिल्म इंडस्ट्री का एक हिस्सा हूँ और मुझे जब कहा गया तो ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट ऑनर टू बी हियर। आई एम वेरी एक्साइटेड कि ये आज मेरे घर के करीब शंकर थिएटर में हो रहा है। लुकिंग फॉरवर्ड। बहुत खुशी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस साल फेस्टिवल नहीं होगा और आई थिंक पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री साथ आई है और उन्होंने ऐसा किया है कि फेस्टिवल होगा। डायरेक्शन से लोगों को कहा कि सच एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल फॉर आवर सिटी मुंबई एंड इट्स सच अ ग्रेट प्लेस वेयर पीपल कैन कम एंड सी फिल्म्स ऑफ डिफरेंट फिल्म मेकर्स, अलग अलग शहरों की फिल्म कैन गेट इंस्पायर्ड बाय देम, शोकेस आवर ओन फिल्म्स। सो इट्स रियली ग्रेट प्लेटफॉर्म कि किरण, अनुपमा मैम एंड ऑल दीस पीपल रियली मेड दिस हैपन। किसका कैमरा लुक? I think first of all I want to congratulate the entire team for managing to put this all together, and I think it's a great thing for Indian cinema. Hamisha we talk about the relevant festival, and I hope that we already are getting there, and I hope that over the years the Mami Mumbai International Festival also becomes as big and as popular. That's what we're all working towards. I think Indian cinema is extremely popular globally world over, and it will be very interesting to have some of the other films from other languages, world cinema, international cinema come down to showcase their films. It's almost like a cultural exchange of various cultures. Please camera look. दिवाली हमारे लिए मेन फेस्टिवल है एज ए फैमिली, पर मैं कोशिश करूँगी कि हाफ डे के शायद मैं जाकर I'm very excited. We all know she's a legend, and I'm also very nervous because other than the fact that there's two things to it. One is I've never done a master class before. I'm doing this only for and the fact that it's with listener. I think I'm going to keep quiet. I think it'll be a master class for me only. I think I'll get to learn a lot from her by just listening to her. ये आप कैसे सवाल पूछ रहे हो यार? मुझे कैसे मालूम किसके साथ रह रहे हैं? मुझे तो पता है उनके पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं। ये इस सवाल का जवाब दीपिका आप कल वोट करने जा रही हैं, कहाँ कितने बजे जाएंगे? I have to check मेरे घर में एक यहाँ है एक वहाँ है, तो मैं चेक आप बता दें कहाँ पे बेहतर रहता है? Parinidhi has just now tweeted that she is proud about all the actions of taking a stand against the controversy of lately, the actions of face controversy. What do you have to say about that? I think as far as that is concerned, I've said what I've had to say. We should all move on with our lives. इसके बारे में शाहरुख की बात करेंगे। मुझे कुछ पता है। मेरे साथ तो नहीं, he is not my co-star, but इसके बारे में शाहरुख all the viewers, wishing all of you a very happy Diwali. अरुण बैठ नहीं पा रहा है।
आई थिंक मामी ऑफ कोर्स बहुत ही स्पेशल फेस्टिवल है. मेरी बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं मामी फेस्टिवल से, और मैं इस साल जूरी मेंबर भी हूँ, तो बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस, क्योंकि मामी जब से मैं बॉम्बे आई हूँ तब से फेस्टिवल अटेंड कर रही हूँ. सो दिस इज़ अ ह्यूज ऑनर कि मैं जूरी में हूँ, एंड आई होप टू वॉच सम ग्रेट फिल्म्स, नॉट जस्ट फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम मुंबई, बट ऑल्सो फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. Which films are you planning to watch? Well, a lot of films. I mean, I am also shooting and I'm working right now, but Boyhood is top of the list. Today's film, Serena, is something I'm quite excited about, and they're quite a मैं वापस आ रही हूँ दिवाली के एक दिन पहले, और मेरी मम्मी भी होगी यहाँ पे, तो फैमिली के साथ कुछ करूँगी. I haven't made any plans, but we normally like to light a lot of diyas, not use so many crackers because it's noisy and polluting. So I think it'll be a quiet but beautiful Diwali. One Diwali wish for your viewers. Just have a very, very happy Diwali and gift each other time. देखिए, मैं सब फिल्में देखने के लिए इच्छुक हूँ, और सबसे बड़ी बात जो मैं फील कर रहा हूँ कि ये फेस्टिवल 6 हफ्ते पहले मर चुका. ये फेस्टिवल था ही नहीं, ख़त्म हो गया. और ये आप सब लोग यहाँ पर हैं और इतने गेस्ट आए हैं, इतना बड़ा फेस्टिवल हो रहा है, ये हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं. पीके के पोस्टर को अगर आप बोलते तो मैं यहाँ लगा देता था आपके पीछे. हाँ, नहीं, सबको देखेंगे. और आज पीके की नहीं, मामी की बात कीजिए, इतना बड़ा ये हादसा हो रहा है. सर, हमने सुना है कि आपने इलेक्शन See, I actually, on the voting front, I hope and pray that one party comes to power, whichever party, because I would hate to see 5 parties doing horse trading at the end of, I think that will be very sad for Maharashtra and very sad for us. So I hope some one party really becomes the majority. दिवाली विश मेरी ये है कि जैसे मामी फेस्टिवल मरता हुआ जिंदा हुआ है, आप सबकी विशेष जो डिफ़िकल्ट विशेष हैं सबकी सब पूरी हो, जैसे ये हमारी पूरी. हैप्पी दिवाली. अरे यार, आएंगे ना यहाँ पे. मुंबई हमारी सिनेमा का शहर है, और फिल्म फेस्टिवल का होना बहुत ही ज़रूरी था, और सबकी कोशिशों की वजह से ये इस साल हुई है. और हमारी एक कोशिश रहेगी कि अगले साल हमें ये दिक्कतें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, और ये स्मूथली नेक्स्ट ईयर हो. लेकिन इस साल भी बहुत हम अच्छी तरह से करने वाले हैं. बहुत अच्छी फिल्म्स हैं, और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत फिल्में देखने वाली हूँ. Thank you. Today is like a Diwali for Mumbai. So, what are your Diwali plans? We usually have a Diwali party at home. So Diwali starts with sort of cleaning the house and getting my son to light lamps, which he loves doing. Putting up Diwali decorations, taking out our little Diwali decorations and putting them out. And on the 20th, whenever Diwali is, we usually have a party at home. So, and on other nights we visit other people. A very happy Diwali to all viewers everywhere, and I hope and pray that everybody has a happy, prosperous and not noisy, not smoky Diwali. I'm very excited. I was extremely worried that they were having trouble resurrecting the sun. Oh, sorry. I'm very excited because Mami was having a bit of trouble resurrecting this year, and I'm very glad it has managed to get through. I'm on the Mumbai Dimensions jury, so it's going to be exciting to see all our Indian filmmakers, all their short films, and I wish the festival all the best. Yep. Which films are you looking Oh forward? God, you! Huh? Which films are you looking forward from the festival? All the films. Damn. I'm terribly excited. I'm glad that Mami has happened, and it's not disappointing, and we're all supporting this. This is a festival that I've been going to since college, and I'm glad I'm here again. I hope to watch all movies.
I wish all the viewers a very happy Diwali. As in a women-centric film, if there's an A-lister actor, so do you think that the female, like the protagonist, the value of the protagonist decreases? If it's a A-lister? Yeah, if the male actor is an A-lister actor. No, definitely not. I think acting is not about being the main or lead or anything. I think it's about the role. And I think whatever role you're doing, it doesn't mean that if you're doing just because the duration is less, your role means any less. I think anyone should do. When you see international cinema, they do all kinds of films. Hello everyone. I'm happy to be receiving this beautiful award with humility and gratitude. So this year we have, when we talk about film professionals supporting this festival, they are not only running the festival, they are also supporting this festival financially. So it's in many ways a very happy turn of events, and we have finally managed to get this festival back on its feet. In terms of quality, it is excellent. In terms of size, it is a little small compared to what it used to be, because earlier we used to have the festival in South Bombay, Central Bombay, North West Bombay, North East Bombay, all that sort of thing. But now it is restricted to an area that is largely inhabited by film professionals. एक सवाल नहीं दो सर। बहुत खुश हूँ कि मामी फेस्टिवल हो रहा है, और बहुत खुश इसलिए हूँ कि इस बार मामी फेस्टिवल फिल्म देखने वालों की वजह से हो रहा है। So what films are you looking forward? What films? Lots of films I'm looking forward. I'm looking forward to all the French movie, the French Rivera, and the Darden Brothers movie, and Love at First Sight, Chateaus. I'm looking for a lot of this whole Russian old movies that have come. अनुराग सर, लगातार बॉम्बे वेलवेट लेट होती जा रही है। खबरें आती, कभी लेट होने की खबर आती है। मैं बॉम्बे वेलवेट के बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूँ, आपको जो बोलना बोलते हैं। कभी एडिटिंग से खुश नहीं है रणबीर? ये जो लोग लिखते हैं अखबार में, आप उन्हीं से पूछो, उनको ज़्यादा मालूम मेरी फिल्म के बारे में। Very excited actually, because this year in particular has been a year that the whole industry has gotten together to support Mami. And I think it's a tremendous achievement that the festival is happening in the first place, given all the issues that it had a few weeks ago, and very, very excited about it. So what films are you looking for on the festival? What films are you looking out on the festival? It's a great, it's a superb collection of world cinema, so I'm actually looking forward to all the movies that I can get a chance to watch. I'm hoping I get to watch as many as possible. Happy Diwali, have a noiseless, beautiful, spectacular, and film-filled Diwali. You're being awarded with Lifetime Achievement Award. So what have you to say on that? You're getting the Lifetime Achievement Award. So your thoughts? Your thoughts? Well, I'm very pleased. I'm very proud. Ma'am, look forward, please. I'm very pleased. I'm very proud. It's an honor, and it's a great pleasure to be here in Mumbai. सर, मामी फिल्म फेस्टिवल हो नहीं पा रहा था, और अब आज हो रहा है, इस पे पहला रिएक्शन आपका? सर वहाँ पे देखिए सामने बॉम्बे शहर में जहाँ हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ पे फेस्टिवल ना हो, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। आई एम ग्लैड कि ये फिल्म इंडस्ट्री ने इस बार आके बाहर सारे लोग ने आके सपोर्ट किया और ये फेस्टिवल आज हो रहा है यहाँ पे। वेरी हैप्पी टू बी हियर।